Studied the basic introduction of belt, rope, and chain drives. What is chain drive? What is rope drive? What is belt drive? Okay. Now next is since in the belt drive or in the rope drive, one side we have more tension, and on the other side the tension is less. So how these tensions are expressed? So this these tensions are expressed in the form of ratio. So that is known as the ratio of belt tensions. Okay. And since this transmit the power, there is a due to this there will be difference. There is a difference in the tension. So the on the side where the tension is more, that side is known as the tight side, and the other side is known as the slack side. So now let's find out or determine the ratio of tensions in the case of flat belt drive. Okay. So this is a flat belt. Here in this figure, this is a pulley. This is a pulley. This contain the belt part. This is the belt part here to here, and this is the angle theta. That is known as angle of lap. Okay. The angle made by the part which is on the pulley. बेल्ट के द्वारा जो पुली पे एंगल बनाया गया सेंटर पे, that angle is theta. Okay. And also let us assume that the pulley is rotating in counterclockwise direction. So this represent the direction of pulley rotation. This is the direction of pulley. The pulley is rotating in the counterclockwise direction. Okay. So let theta is angle of lap. T1 is the tension on the tight side, that is 92 is the tension on the slack side, Now since the direction is in the counterclockwise direction, so this pulley, this will pull the belt from this side. इस साइड से बेल्ट को खींचेगी और साइड से बेल्ट को रिलीज करेगी. Therefore this becomes the tight side and this becomes the slack side. This is the reason. So theta is the angle of lap, T1 is the tension on the tight side, T2 is the tension on the slack side. Mu is the coefficient of friction between the belt and the pulley, between belt and pulley. Okay. Okay. So we are interested in determining this, the ratio of tension. So the ratio is represented by the tension on the tight side divided by the tension on the slack side. So this we have to determine. So for that, let us consider a very small length of the belt on the pulley. बहुत ही छोटी लेंथ, इनफाइनाइट ऐसे मिली स्मॉल जो लेंथ है वो हम बेल्ट की कंसिडर करेंगे. So let that length is this PQ. This PQ represent a very small length of the belt on the pulley. And this length is subtending an angle del theta at the center of the pulley. ये del theta जो एंगल है ये पुली सब पे subtend कर रही है पुली. The normal reaction is R, which is acting on the belt. ये बेल्ट के ऊपर है ना. This is the reaction of pulley on the belt. Is pointed tangential, and here this is
the tension. This will act tangential to this belt length here also. This is, and let for this small length PQ, for small length PQ of belt, let T be the tension on slick side. Then the tension on tight side, tension on tight side for this small length PQ becomes T plus delta T, some amount greater than the slick side. So that is the amount which is greater than here. And since this angle is del theta, therefore this angle become del theta by 2. This angle will also become del theta by 2. And this is the tangential line. Okay. So this angle will also become del theta by 2. And this angle will also become del theta by 2. Now, there will be a force of friction on the belt. So that force of the friction is mu r. If r is the normal reaction, जो इस बेल्ट पर है पुली के द्वारा. So mu r is the force of friction. Now, how to choose the direction of this force of friction? Since the pulley is rotating in the counterclockwise direction, so the force of friction on the pulley will be in the right direction. And the force of friction on the pulley, on the belt will be in the right direction. So this is the direction of force of friction. ये force of friction की direction होगी belt के ऊपर, not on the pulley. pulley के ऊपर तो ये, क्योंकि pulley counter clockwise है, तो जो friction force है वो इस direction में लगेगा और belt के ऊपर इसके opposite लगेगा. So this is the belt. Now if this small part of the belt is in equilibrium, जो small part है P की यदि equilibrium में है, so the summation of all the forces tangential in tangential direction should be 0, and the summation of all the forces in radial direction should also be equal to 0. So let's do this. निकाल लेते हैं, resolving the forces, resolving the forces in tangential direction, tangential direction. Tangential direction. So it will be mu into r. This is the force, and the component of this tension. Is tension ka component in the tangential direction. So it will be T cos del theta by 2. Okay. So plus T cos del theta by 2, and there will be force due to this tension T plus del T, T plus del T. So it will be, if this we are considering as a positive, then this will be negative. So here we have T plus del T into cos of del theta by 2. That is equal to 0. Say this is equation number 1. Okay. Now, and resolving the forces, resolving the forces in radial direction. In radial direction. So what are the forces in the radial direction? We have this force R that is moving in the upward direction. So this is R. Then the radial, the component of this in the radial direction. So it will be T sine del theta by 2. So T sine del theta by 2.
and this direction is downward. So if we are consider upward is positive, downward will be negative, and t plus del t into sine del theta by 2, that is equal to 0. So this is equation number 2. ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया, एंड दिस विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन. चलो आगे बढ़ते हैं. Now here it is mu r. In the question 1 को यदि देखें तो mu r plus t cos del theta by 2 minus t plus del t cos del theta by 2. इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन 1 को पहले. mu r plus t cos del theta by 2 minus t cos del theta by 2 minus del t into cos del theta by 2, that is equal to 0. So this will cancel out. So we have mu r minus del t into cos del theta by 2, or this is equal to 0, or mu r is equal to del t into cos del theta by 2. Say this is equation number 3. And this equation, for equation number 2, we have r minus t sine del theta by 2 plus t sine del theta by 2 plus delta t del theta into sine del theta by 2 equal to 0. So this will cancel out. So we have r plus del t into sine del theta by 2. So this is equation number 4. Okay. And since the belt length is small, PQ is a very, very small length, therefore the angle subtended del theta will also be small. And since del theta is very small, therefore cos del theta by 2 becomes 1 and sine del theta by 2 becomes del theta by 2. So putting these values in equation number 3 and 4. So we have mu into r is equal to del t, and in equation number 4 we have r plus something is wrong. Yes. Here some convention, यहाँ पे कुछ गलत हो गया. This t plus del t into sine of del theta by 2, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा, इट विल बी माइनस साइन. तो करेक्ट कर लेते हैं इसको. ये तो ठीक है. सो इट विल बी माइनस. हाँ, यहाँ हो जाएगा r माइनस टी साइन डेल थीटा बाई 2 माइनस टी साइन डेल थीटा बाई 2 माइनस डेल टी इंटू साइन डेल थीटा बाई 2, that is equal to 0. So this will be r minus
twice t into sine del theta by 2 minus del t into sine del theta by 2 equal to 0. So since del theta is small, is very small, therefore cos of del theta by 2 is equal to 1 and sine del theta by 2 is equal to del theta by 2. So equation third becomes this. And what will be the changes in the equation number 4? This is equation number 4. So the changes will be r minus 2t into del theta by 2 minus del t into del theta by 2 equal to 0. Since del theta is a small angle and delta t is also smaller, so the product of the two smaller quantities will become smaller. So hence this we can neglect. So this equation becomes r minus this 2 and 2 will cancel out, t into del theta, that is equal to 0. So one is this relation and another is this relation. So putting the value of r here, there, from this relation we can find out r is equal to t times del theta. So mu into t into del theta, that is equal to del t, or mu into del theta or del t upon t is equal to mu into del theta. So we can find out t1 upon t2 if we integrate this. If we integrate this, so integrating this from t2 to t1, since t2 is small, t1 is greater. So del t by t, that is equal to integration 0 to theta, the angle is from 0 to theta, and mu del theta. So this becomes t2 upon t1 into dt upon t in the limit, and this becomes 0 to theta mu times d theta. So integrating this, so on integrating, this becomes log of t, log t हो जाएगा, and this is mu theta. So log t reach t limit t1 t2, and this becomes mu into theta. That is limit इसकी रहेगी 0 से लेके theta तक. So it will become log t1 upon t2 is equal to mu theta, or t1 upon t2 is equal to e to the power mu theta. So this is the ratio of tensions in the belt drive. This is for the case of flat belt. This is for the case of flat belt drive. ये flat belt drive के लिए, ठीक है. Now for V belt drive, V belt drive क्या changes होगा इसमें? So for V belt drive, the equation will be, एक मिनट, हाँ, फिगर लेके आता हूँ.
Okay. So this is the V belt, or this is applicable also for the rope drive also. Okay. So this V belt or rope makes contact on the two sides of the groove. So here the pulley is a groove pulley, not a flat pulley. Groove है. So there will be contact on the two sides. जो rope या belt का V belt का जो contact हो two sides में होगा. Here figure A. This is the angle of groove 2 alpha. 2 alpha is the angle of groove हो गया. So here the pulley is in contact with this belt part, and here the pulley is in contact with this part. So this is the normal reaction Rn, and this, since this angle is 2 alpha, so therefore this angle is alpha, and this angle is also alpha. This is also Rn. So here this is the smaller length PQ. This is the tension T. So the tension here will be T plus del T. This is the right side T1. This is T2. The angle is theta. The angle subtended by this PQ is del theta. So here it is del theta. So this angle is del theta by 2. This angle is del theta by 2. Okay. Now this R here, in case of V belt or the rope belt, this is 2 Rn sin alpha. 2 Rn sin alpha. 2 Rn sin alpha will be there. The force of friction here will be mu Rn, that is the 2 mu Rn, and the changes means similarly जैसे हमने flat belt के लिए किया था कि resolving the forces in radial direction and in tangential direction. So वो जब हम resolve करते हैं forces को, so we have similarly these equations. यहाँ जो equations थी ऊपर, ऐसी equations बनेगी, and we'll move in the same way. The only difference is here mu की जगह जो है, in place of mu we'll use mu by sin alpha. Mu by sin alpha. So that is I'm sharing that. उसको पूरा नहीं करूँगा. So let me share the document. Yeah. So this is the equation when we resolve the forces in the tangential direction. That is 2 mu Rn plus T cos del theta by 2 minus T plus del T cos del theta by 2 equal to 0. And expand किया तो this and this will cancel out. So we have 2 mu Rn is equal to del T into cos del theta by 2. Then in the radial direction, we have this equation 2 Rn into sin alpha is equal to 2 sin del theta by 2 plus T plus del T into sin del theta by 2. So this becomes 2T plus del T to sin del theta by 2. And since the PQ length is very small, therefore del theta is very small, is also very small. Therefore sin del theta by 2 becomes del theta by 2, and cos del theta by 2 becomes 1. So putting this value, so we have here the relation 2 Rn into sin alpha is equal to 2T plus del T into del theta by 2 is equal to T del theta plus T del theta into del theta by 2. इसको expand किया तो, so ये product दो smaller quantities का है. So this is also smaller, so we can neglect this in comparison of these quantities. तो उसको neglect किया. So we have 2 Rn sin alpha is equal to T into del theta, or Rn is equal to T into del theta upon 2 sin alpha. So substitute this value, we will substitute in the equation, in this equation, ये वाली equation में यहाँ पर put करेंगे. So we have mu into T into del theta upon sin alpha is equal to del T, or T into del theta upon T is equal to mu upon sin alpha
into del theta. Sorry, this is T into del theta upon में del T is equal to mu upon sin alpha into del theta. And in the limit, when we are integrating this limit, so we have T2 to T1 dt upon T is equal to 0 to theta mu upon sin alpha into d theta. So here mu is replaced by mu upon sin alpha. This is the only difference between the flat belt drive and the V belt or the rope belt drive system. So T1 upon T2 is equal to e to the power mu upon sin alpha into theta, or mu into cosec alpha into theta. This is the case. ये चेंज आ जाएगा सिर्फ उस केस में, जो पुली का एंगल है वो हाफ एंगल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा इस रिलेशन में. So this is the ratio of the belt tensions in case of flat belt drive and in case of V belt or rope belt drive system. Now here, if the diameter of the two pulley differs, दोनों का diameter यदि equal है, ड्राइविंग पुली का भी और ड्रिवन पुली का भी, so T1 upon T2 हम, if the material is also same, दोनों पुली का material भी same है, तो we can use any of the pulley, ड्राइवर पुली या ड्रिवन पुली, दोनों के लिए टेंशन हम T1 upon T2 is equal to e to the power mu theta वाली रिलेशन यूज कर लेंगे. But if one pulley is smaller and other pulley is larger, so in that case we will consider the theta angle for the smaller pulley, क्योंकि smaller pulley पे slip के chances ज़्यादा होंगे. So T1 upon T2 is equal to e to the power mu theta. ये जो हम यूज करेंगे इसमें थीटा जो रहेगा वो स्मॉलर पुली के केस में रहेगा, क्योंकि स्लिप के चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ लैप कम होगा वहां पे. ठीक है. नाउ what will be the power transmitted by the belt drive? That is the ratio कि the driving pulley is rotating and rotating the driven pulley, है ना, कि power transmit हो रहा है from the driving to the driver, driving to the driven. ठीक है. तो ड्राइविंग से ड्रिवन में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, बट वो जो पावर ट्रांसमिशन है कितना होगा? What will be the power transmitted by the belt drive? So this is the case. This is so this power transmitted by the belt depends on the tension on the two sides and the belt speed. तो ये डिपेंड करता है कि जो टेंशन बेल्ट में है दो साइड में वो क्या है और बेल्ट की स्पीड क्या है. So if T1 is the tension on the tight side and T2 is the tension on the slick side in Newton, and if V is the speed of the belt in meter per second, so the power transmitted by the belt is represented by this. This is the power transmitted by the belt in watt. That is T1 minus T2, the difference of the two tensions multiplied by the velocity of the belt. In watt, the unit is watt. So in kilowatt, this is the relation T1 minus T2 into V upon 1000. So this is in kilowatt. We can also represent the power in this form. Power is equal to T1. If we take out T1 outside, so we have 1 minus T2 upon T1 into V divided by 1000. So here we can use the relation of ratio of the tensions. So we can write this as 1 minus 1 upon e to the power mu theta here. Yeah, this is the limiting condition. So this we have power is equal to T1 into 1 minus e to the power minus mu theta into V upon 1000 in kilowatt. And this T1 is the maximum tension in the belt. The maximum tension in the belt drive. वो T1, that is the tension on the tight side. Tight side में जो tension है वो greatest tension होती है in the belt drive system. So
This depends on the capacity of the belt to withstand the force. भाई बेल्ट की यदि हम बात करें तो कितना मैक्सिमम फोर्स वो विदस्टैंड कर सकता है, सो दैट T1 उसके ऊपर डिपेंड करेगी. तो इफ द अलाउएबल टेंशन और अलाउएबल स्ट्रेस in the belt is sigma T. Allowable stress in the belt is sigma T. The allowable stress belt की sigma T है material की. That is the permissible stress in Newton per meter square or Newton per mm square or in Pascal. So then we can relate this with the allowable stress, that is the T1 is equal to sigma T multiplied by the area of the belt, multiplied by the area of the belt, that is, and the area of the belt is, in case of flat belt, it is this area, it is this area. So here this is the width of the belt and this is the thickness of the belt. This is thickness and this is the width of the belt. So T into B. So this is T into B. So when it is multiplied with the sigma T, so we have the allowable force or permissible force in the belt material, in the belt, and that is the maximum force जो belt resist कर सकता है या जो सब्जेक्ट जो बेल्ट को मैक्सिमम फोर्स सब्जेक्ट हो सकता है, जो एक्ट हो सकता है बेल्ट पर, दैट इज सिग्मा टी इंटू टी इंटू बी, एंड दैट इज उतनी टेंशन होनी चाहिए बेल्ट ड्राइव में, मैक्सिमम टेंशन. सो दैट इज T1 is equal to sigma T into T into B. So that is in Newton. So if we know the maximum tension in the belt and the allowable shear allowable tension of the belt material, then we can define the cross section of the belt. कि belt का cross section क्या होगा? So there are some standard cross sections of the belt, जिसमें T और B. If we know the T, we can find out B. If we know the B, we can find out T. So in the design data handbooks, we have this cross section, standard cross sections of the belt, जो normally available है in the market, or the manufacturers of the belt जो cross section के belt बनाते हैं. So one is the cross section of the belt and another one is the length of the belt. Belt की length कितनी है, ठीक है. So that is the standard cross sections that is available. We'll choose from the standard cross section का जो टेबल है वहां से हम चूज कर सकते हैं. Now, since the belt is a rotating member, so the belt may also be subjected the centrifugal force. क्योंकि बेल्ट रोटेट हो रहा है यहाँ से लेकर ड्राइवर से ड्राइविंग तक बेल्ट रोटेट हो रहा है. सो बेल्ट इज अ रोटेटिंग मेंबर. तो रोटेटिंग मेंबर है, सो द रोटेटिंग मेंबर इज सब्जेक्टेड टू सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. तो बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. सो ड्यू टू दैट देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन. सो बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी डेवलप्ड होगी. So centrifugal tension बेल्ट में डेवलप्ड होगी, तो what is the value of that centrifugal tension? वो जो centrifugal tension यदि बेल्ट में है तो कितनी है? So let that centrifugal tension is denoted by Tc. Tc is the centrifugal tension, and this is same on the tight and the slack side. So to determine this, this is the case. ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है और ये बेल्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है. So this is the centrifugal force which is acting on the belt इस साइड में, और ये ड्रिवन पुली पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है. सो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डेवलप्ड हो रही है इस बेल्ट. सो दैट इज Tc. सो लेट अस कंसीडर कि Tc कितनी होगी, ठीक है. सो Tc कितनी होगी? सो दिस वी आर कंसीडरिंग दिस कि ये एक पुली है. दिस इज वन ऑफ द पुली and the radius of the pulley is r, and there is a smaller length of the belt. ये एक smaller length है बेल्ट की. इस
पुली के ऊपर, है ना, जैसे हमने पी क्यू लिया था वैसे ही यहाँ पर भी ये स्मॉलर लेंथ हमने यहाँ पर कंसिडर की, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये स्मॉलर लेंथ बेल्ट की इस पुली के सेंटर पर डेल थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। सो दिस इज द टेंजेंशियल साइड एंड दिस इज द रेडियल साइड। बेल्ट की यदि हम बात करें तो ये रेडियल डायरेक्शन हो गई और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई। तो ये एंगल डेल थीटा बाय 2 हो गया। सिमिलरली दिस एंगल विल आल्सो बिकम डेल थीटा बाय 2 and this is the tension on one side, the centrifugal tension, and this is the centrifugal tension on the other side, TC. This is the centrifugal force, smaller length ये Q. So find out करते हैं, अब इनको बैलेंस कर लेते हैं हम in the यदि ये smaller portion of the belt, smaller portion of the belt is in equilibrium, यहाँ पर equilibrium में है, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0 होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0 होगा, 0 है। तो लेट also consider, since this is the centrifugal force, so let m be the mass of the belt per unit length of the belt. तो इस स्मॉलर लेंथ का कुछ मास है बेल्ट का। So हम let us consider कि mass per unit length हम ले लेते हैं, so that m is nothing but the mass per unit length of the belt, ठीक है, that is in kilogram per meter, यदि हम यूनिट लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर। तो इस स्मॉलर लेंथ जो है, स्मॉलर लेंथ ये PQ, इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, since the mass is represented as mass per unit length, so this per unit length हो गया, तो what will be the length of this smaller portion, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, since this is the radius r, this angle is del theta, so we can find out this length, ये जो arc length है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो रेडियस और यदि एंगल मालूम हो तो हम इन दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this arc length is radius times the angle. So this will be r into del theta. तो इस स्मॉलर पोर्शन की लेंथ होगी r into del theta. तो इसका मास क्या हो गया, m into r into del theta, स्मॉलर पोर्शन का मास r into del theta into m, ये मास हो गया स्मॉलर पोर्शन। Now the centrifugal force centrifugal force is mv square by r. We know this relation where we represent the velocity, m is the mass and r is the radius. So r d del theta into m, this is the mass, ये v square इसकी velocity और इसका radius. So this r and this r will cancel out, so we have del theta m v square. So this is in meter per second, the speed of the belt, और r is the radius of the pulley in meter में। So this is the centrifugal force, ये बेल्ट में centrifugal force act कर रहा है। Now resolving the forces on the element normal to the tangent, that is along the radial direction में यदि resolve करें तो it will be FC। देखो यहाँ पर radial direction इस direction में करें, तो इस direction में करें तो क्या है, this is FC है, फिर ये जो TC है इसका component इस direction में, इस TC का भी इस direction में component, so that is TC into cos del theta sin del theta by 2, और ये भी TC into sin del theta by 2 हो जाएगा, 2TC sin del theta by 2 आएगा। So FC इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो FC माइनस ट्वाइस ऑफ TC into sin del theta by 2 is equal to 0, ये हमारी इक्वेशन होगी। And since the length PQ is smaller, so the angle subtended will also be smaller, so sin del theta by 2 is nothing but del theta by 2, so that is sin del theta by 2 is equal to del theta by 2. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, now this will becomes FC minus twice TC into del theta by 2, and this 2 and 2 will cancel out, so we have FC is equal to TC into del theta. This is one of the relation, ये एक relation ही होगी, FC is equal to TC into del theta. Now resolving tangentially resolve करें,
या इसकी वैल्यू को हम पुट कर दो कि ये FC निकल गया, सो ये FC है, तो FC इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज R इंटू डेल थीटा इंटू M इंटू V स्क्वायर बाय R। तो हम एक काम करते हैं, अभी यही रख देते हैं पहले इसको। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ FC, so this equation will become TC into del theta, so this is TC into del theta, and this become mv square by R into R del theta, mv square by R into R del theta। so this is R कैंसिल हो चुका था, del theta कैंसिल हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो गई हमारी mv स्क्वायर के बराबर। so this is the centrifugal tension in the belt drive, TC is equal to mv स्क्वायर, ये mv स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है, mv स्क्वायर के बराबर होगी। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितनी हुई, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इतनी हुई। So therefore, considering the effect of the centrifugal tension, the belt tension on the tight side when power is transmitted is given by। अब बेल्ट की टेंशन क्या हो जाएगी, टाइट साइड में टेंशन क्या होगी और स्लेक साइड में टेंशन क्या होगी, इफ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यदि हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके कारण टाइट साइड की टेंशन में क्या चेंज होगा और स्लेक साइड की टेंशन में क्या चेंज होगा। सो व्हेन द बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो देखें कि क्या इफेक्ट होगा। सो द टेंशन ऑन द टाइट साइड is T1 if we do not consider, if we are not considering the effect of centrifugal tension, यदि हम कंसिडर कर रहे हैं तो T1 के साथ में TC भी आ जाएगा। So here it will be T1 plus TC. So this is represented by TT, that is a total tension and tension in the tight side, tension of tight side, TT is equal to T1 plus TC। और स्लेक साइड में हो गया TS, that is equal to T2 थी पहले भैया, अब इसमें TC और बढ़ गया, TC और एड ऑन हो गया, सो T2 प्लस TC हो गया। सो TT द मैक्सिमम टेंशन बेल्ट में कितनी हो सकती है, दैट इज सिग्मा T इंटू T इंटू B के बराबर, कि बेल्ट कितनी रेजिस्ट कर सकता है। सो मैक्सिमम टेंशन जो डेवलप होगी और बेल्ट में कितनी होगी, सिग्मा T इंटू T इंटू B के बराबर होगी। सो this is the tension on the tight side, या हम बोले T1, तो T1 को भी हम निकाल सकते हैं, since T1 is TT minus TC, TT minus TC, so this is TT minus TC, इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो वन इज ratio of belt tensions, tight side and in the slack side. Then if the belt is subjected to centrifugal force, तो centrifugal tension भी होगी बेल्ट में, तो वो भी हमने इनकॉर्पोरेट की कि वो कितनी हो गई, तो टाइट साइड टेंशन क्या हो गई। ना जब हम बेल्ट को व्हेन वी आर माउंटिंग द बेल्ट ऑन द पुली, है ना, तो ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम बेल्ट को जब पुली पर माउंट कर रहे हैं तो एक पुली पर माउंट किया, उसके बाद दूसरी पुली पर जब माउंट करते हैं तो थोड़ा सा उसको हम टेंशन देते हैं, खींचते हैं ना, तब जाके वो लगता है। ऐसा तो नहीं है कि बेल्ट आया और उसको ऐसा कैसा यूं फिट कर दिया ड्रिवन पुली और ड्राइवर पुली पे, नो, उसको एक पुली पर माउंट करने के बाद में दूसरी पुली पर जब हम बेल्ट को माउंट करेंगे तो उसको हम इनिशियली स्ट्रेस करते हैं। सो इनिशियली उसको खींचते हैं, टेंशन, इनिशियल टेंशन देते हैं उसको, तब वो पुली पर माउंट होता है। तो इनिशियल टेंशन जो होगी वो कितनी होगी, क्योंकि इनिशियल टेंशन कितनी होगी इफ यू आर कंसीडरिंग दिस आल्सो, तो टेंशन ऑन द टाइट साइड क्या होगी, टेंशन ऑन द स्लेक साइड क्या होगा, लेट अस फाइंड आउट। सो व्हेन अ बेल्ट इज माउंटेड ऑन द पुली, some amount of initial tension, say T0, is provided. So let the initial tension is denoted by T0. Otherwise, power transmission is not possible because a loose belt cannot sustain
difference in the tension and no power can be transmitted. बेल्ट लूज नहीं होना चाहिए, लूज बेल्ट ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, स्लिप इतनी ज्यादा होगी कि मूव नहीं करेगा जब पुली रोटेट होगी। सो व्हेन द ड्राइव इज स्टेशनरी, है ना, जब ड्राइव स्टेशनरी है, द टोटल टेंशन ऑन बोथ द साइड्स विल बी 2 into T0, दोनों साइड में मिलाकर टेंशन हो जाएगी 2T0। एंड व्हेन बेल्ट ड्राइव इज ट्रांसमिटिंग पावर, the total tension on both the sides will be T1 plus T2, tension on the tight side plus tension on the slack side, तो total tension जो है बेल्ट में क्या हो जाएगी, T1 plus T2 हो जाएगी। So if effect of centrifugal tension is neglected, तो twice T0 is equal to T1 plus T2, क्योंकि यही लेंथ वही लेंथ होगी बाद में। So T0 is equal to T1 plus T2 by 2, that is the mean of the two tensions. So if effect of the centrifugal tension is also included here, so T0 is equal to Tt plus Ts, ये Tt plus Ts by 2, so that is T1 plus T2 plus 2 Tc, इतना हो जाएगा। So T0 is equal to T1 plus T2 by 2 plus Tc, या T1 plus T2 plus twice Tc divided by 2, ये initial tension हो जाएगा। ठीक है। So I think that's all for today. इतना ही, अब जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड है और प्रॉब्लम्स जो हैं हम सॉल्व करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। So आज हमने क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया? हमने आज डिस्कस किया कि बेल्ट की जो टेंशन है टाइट साइड और स्लेक साइड, तो उस टेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट इन द रेशो। सो हियर वी यूज द टर्म बेल्ट टेंशंस, रेशो ऑफ बेल्ट टेंशंस। सो दैट इज द टेंशन ऑन द टाइट साइड डिवाइडेड बाय द टेंशन ऑन द स्लेक साइड। So we have determined this for the flat belt, that is T1 by T2 is equal to e to the power mu theta, and for the V belt or the rope drive, T1 upon T2 is equal to e to the power mu upon sin alpha into theta, या mu cosec alpha theta। फिर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की हमने बात की कि since belt is a rotating member and if it is considerable, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी लग, सो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण तो बेल्ट में टेंशन टाइट साइड और स्लेक साइड में क्या हो जाएगी। देन इनिशियल टेंशन कि हम बेल्ट को माउंट करते हैं पुली पर, सो उसको हम इनिशियली स्ट्रेस करते हैं। सो दैट वी हैव डिटरमाइंड द इनिशियल टेंशन। व्हेन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज नॉट इंक्लूडेड, और फिर सेकेंड टाइम जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंक्लूड किया तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, इनिशियल टेंशन। इतना आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हाँ वी आल्सो डिस्कस द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट ड्राइव, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टेंशन ऑन द टाइट एंड द स्लेक साइड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, दैट इज T1 minus T2 into V। ये पावर ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन ये पावर ट्रांसमिट जो हो रहा है इसमें मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट होगा, so that maximum power transmission we will discuss in the next class, and then we'll do some problems on the belt and the rope drives. So that's all for today. Now I will take your attendance.